Hello guys, so today in JEE class we are going to start a new topic, that is volumetric analysis. Basically this topic is volumetric analysis. Okay, so this can be said that most of the questions which are asked in JEE on based on volumetric analysis, and even in NEET examination, in both the cases most of the questions are based on redox reaction. So we have waited a lot on this topic. We have not went into this topic directly after mole concept, rather than we finished redox and went into this topic. So it creates a smooth pathway. So let us start this with very simple questions. So first thing we are going to do is, remember I am not going to take up any simple titration without redox change. ठीक है ना? Why I am not going to take up that thing? Because that can be easily solved while you are doing your mole concept problems. You have already done acid base titration. ठीक है ना? So now we will be starting with, for first topic is simple titration. ठीक है ना? Simple titration, but it will have redox. So there will be different kind of titration that we are going to do. So first of all, what is titration? Titration is a process of neutralization. ठीक है ना? Titration is a process of neutralization, but in this case everything is soluble. ठीक है? So I take a base and I titrate it with an acid by help of a burette. ठीक है? Drop by drop I give the acid into the base, and there is an indicator. Say it can be methyl orange, it can be phenolphthalein, which will allow me to know that whether the base that was in the beaker is completely neutralized. ठीक है? When I will understand, when the color just changes. So by this method we can understand, or we can find out the concentration of different solution. Now how? First of all, in simple titration what we do is we find out concentration. ठीक है? We find out concentration of an unknown solution. ठीक है ना? Unknown solution. What do you mean by unknown solution? A solution whose concentration you don't know, say n. ठीक है? Normality is n, that means unknown concentration. ठीक है? By a solution of a standard concentration, or you can say a standard solution. So suppose you have an acid in which you know what is the normality of that acid, and definitely if you know the normality, you know the concentration, and you have a base. Suppose if this is a base, let's take this is a base, but at this moment I don't know that whether it's what is the normality of this base. So what I'll do, I'll take some amount of this base. Okay, I'll take some amount of this base in a beaker, say like this. I take this beaker, some amount of base, and this is my burette. Okay, on this I put a thistle funnel so that I can put acid. Okay, and there is graduated tube, burette, and here is my base. So before I have put in the base, I know the amount of base that I have used. So let the base have a normality of N1 and volume of V1. After that I am putting in acid. Okay, I am putting in acid whose normality I know, say N2 is equal to 2 normal. Okay, either का V1 I know because let's take it 20 milliliters. Okay, V1, and after that I put some indicator. So at certain point of time I see that this base has suddenly neutralized. Now I calculate how much volume of acid has been consumed. Okay, so I find out that the acid consumed is say 20 milliliter again, or say 30 milliliter. Okay, so acid consumed is 30 milliliter, base used is 20 milliliter, but base normality I don't know. So in this case, remember, definitely there has been a reaction between acid and base. है ना? There has been a reaction between acid and base. So whenever any reaction happens, reactions, remember this is a very important topic. Reaction happens in equivalence. ठीक है? So if there is a acid plus base reaction which gives some salt,
plus water, always number of equivalent of acid will be equal to number of equivalent of base. ठीक है, always. So that means milli equivalent of acid will be equal to milli equivalent of base. Now what is milli equivalent? See, milli equivalent MEQ is number of equivalents into 1000. ठीक है, number of equivalents into 1000. What is milliliter? Liters into 1000. Similarly, milli equivalent is number of equivalents into 1000. How do you calculate number of equivalents? Weight by equivalent weight, ठीक है, into 1000. हो गया? This is how you calculate the equivalent weight, number of equivalents. Next there will be a question, sir, how will I calculate equivalent weight? So these things are already explained, I am just giving you a revision. Equivalent weight is molecular weight divided by n factor. ठीक है, n factor is number of electrons exchanged by one molecule of the reactant. ठीक है, in case of acid base it is normally acidity or basicity. ठीक है ना, NF is acidity or basicity in case of acid base. But in case of oxidation and reduction reaction or oxidizing agent or reducing agent, it is the number of electron transferred per molecule of that compound we are taking. ठीक है, हो गया. So this is the formula we are going. Now how will we calculate milli equivalent? Milli equivalent can be calculated by N1 V1 and here it will be say N2 V2. ठीक है, this V1 shall be in milliliter. In case of milli equivalent, this V1 and V2 shall be in milliliter. If you want to calculate this equivalent, then V1 and V2 will be in liter. ठीक है, so this is the total concept of your simple titration. So let us do one problem. ठीक है, so may I rub this one? I have to. ठीक है, okay, our first question is 0.4 molar of KMnO4. 0.4 molar KMnO4. ठीक है, 0.4 molar of potassium permanganate is titrated with 0.05 molar FeSO4. ठीक है, now this happens in acidic condition. ठीक है, acidic medium, this happens in acidic medium. I have to find out okay, I have to find out the volume of KMnO4 required. ठीक है, if FeSO4 volume is 50 milliliter. ठीक है, if FeSO4 volume is 50 milliliter, I have to find out the volume of KMnO4. So first of all, let us see what this reaction is. This is a acidic medium reaction. In acidic medium, so the reaction is between which two compounds? Reaction is between KMnO4 and FeSO4. ठीक है, so KMnO4 under acidic medium we know it is a very good oxidizing agent, and under acidic medium it changes to Mn2+. ठीक है, FeSO4 will change to, because this reduces, manganese from +7 stage reduces to 2+. So this is a reduction, so definitely this will undergo oxidation. So only one thing is possible, that is Fe3+. So here कितने इलेक्ट्रॉन का गोल्पो है? 5 इलेक्ट्रॉन का गोल्पो है, और इधर आपका 1 इलेक्ट्रॉन का गोल्पो है.
So in case of KMnO4 in acidic medium, the N factor is 5. In case of FeSO4, the N factor is 1. ठीक है, clear है? Now I have to just do what I need to do. First of all, if I take this as solution 1 and if I take this as solution 2, so N1 I need to find out normality of KMnO4. So this is given molarity. I know normality is always N factor into molarity. So here it will be 0.4 into 5. So it is 2 normal. ठीक है, हो गया. Next normality 2 will be is equal to NF into M2. So here if you see the N factor is 1, so it doesn't really matter. You can write directly 0.05 normal. ठीक है. Next, in case of titration, we know milli equivalent of KMnO4 will be equal to milli equivalent of FeSO4. So this will be N1 V1 is equal to N2 V2. Remember, this equation is much important than this one. This will help you memorize, this will help you understand concept. So N1 is 2, वॉल्यूम कितना है आपका KMnO4 का निकालना है. So V1 and here N2 is 0.05, volume is known, that is 50 milliliter. So V1 will be equal to 0.05 into 25, that is 1.25 milliliter. ठीक है, डन. So that is volume of KMnO4 required. Simple problem, simple answer, 2 minutes, है ना. चलो, so that is what simple titration is. But here one thing about this titration, because this involves redox, as you can see. So certain reactants, there will be some important N factors which you need to remember. It is better if you remember, or by just practicing you will automatically remember time to time. That also you can do, but I have listed down them. So the important ones, so time to time this doesn't end it, but time to time this list will be modified, okay, as we do other reactions. So some you can write down some redox titration and their N factor. So suppose we are talking about Fe2 plus and MnO4 minus, just like the one we did. So in case of Fe2 plus, N factor will be 1. In case of MnO4 minus, the N factor will be 5. ठीक है. Next is Fe2 plus Cr2O7 2 minus. So this one you can copy, Cr2O7 2 minus, N factor is 6. Okay. Next is, अच्छा एक ही साथ ये भी कर लो, if MnO4 minus is in basic medium and if MnO4 minus is in acidic medium, ठीक है ना. So in that case, in basic medium N factor is equal to 1, in not in acidic this will be neutral. Acidic तो हो गया, ठीक है, acidic ये वाला है, ठीक है ना. N factor will be equal to 3, ठीक है, हो गया. न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, MnO4 माइनस चेंजेस टू MnO2, ठीक है. सो दिस इज +4 and in basic medium it changes to MnO4 2 minus, ठीक है. नेक्स्ट, okay, H2O2, if you titrate with MnO4 minus, you can check the N factor of MnO4 minus will be again 5 and N factor of H2O2 will be 2. Yes, 2, ठीक है. You can check this one also because H2O2 is going to change to O2, ठीक है. H2O2 is going to change to O2. So here it is -1, here it is 0. Change is 1, 2 atoms, so 1 into 2, ठीक है. Next is AS2O3. Sorry, the video got interrupted.
suddenly. Okay, I think I have completed up to this part. Okay, this part is completed. Yes. So after that we are doing this. So AS2O3 and MnO4 minus. So if you see AS2O3 in acidic medium of MnO4 minus, it changes to arsenate ASO4 3 minus. Okay. So here the oxidation state is +3, here the oxidation state is +5. So there is a change of 2, but 2 into 2 will be 4, so N factor is 4. MnO4 minus, you know, in acidic medium it is 5 N factor. Okay na? Next is ASO3 3 minus and BrO3 minus. So ASO3 3 minus changes to ASO4 3 minus. Here there is oxidation from +3 to +5. Here there is oxidation from, here is reduction from +5 to -1. So here there is a change of 6. Here there is a change of 3 to 5, that is 2. So N factor will be 2 and N factor will be 6 in this case. Okay? So these are some common ones that we have done over here. Next is one thing, another important one is there. I hope you can see this. S2O3. S2O3 2 minus changes to S4O6 2 minus. You can check the oxidation state. The N factor in this case will be 2. Okay? N factor in this case will be 2. Okay, guys? So this chart will be important to you in various cases. So thoda pad lo. So if you study a little bit, you can remember all those things. At least you get an idea that what will change to what, and more or less it remains within this, so you will not face any problem. Okay? Okay. So simple titration khatam. Okay? Need to practice lot of problems definitely, but basic jo theory hai that we have completed. After this we will shift to a very important part, that is called back titration. Okay? Very important. It is called back titration. So what is back titration first of all? First of all, back titration is used to find out purity of a sample. Okay na? If you are given a sample, you can calculate what? Calculate percentage purity of a sample. Percentage purity of a sample. That is my back titration. Okay? So how I am going to do it first of all? So first of all, there will be 3 solutions in this case. तो ये जो sample है इसको हम C ले लेते हैं. ठीक है? I will take it as C. And there will be another 2 solution by which I am going to titrate. So there are 3 things that we are going to need over here. A, B, C. ठीक है? So now there are some conditions. So you please write down this condition for back titration, important conditions. For this method, some important conditions are there. Number 1 is A and B reacts. ठीक है? Next is A and C reacts, but product of A and C doesn't react with B. ठीक है? And always take excess A with respect to C. ठीक है ना? Always take excess A with respect to C. So these are the important condition of back titration that you need to remember basically, and you will understand why these are very important, because these are all important due to you can say logic and calculation. ठीक है ना? So ऐसा नहीं है कुछ याद रखना है, you can understand while we perform this procedure. So number 1, what you do? Number 1 is you put a flask of A. ठीक है? Flask of A in which by burette you, this is my thistle funnel, and you put B and you titrate. ठीक है? So first of all you put A and within that you put B and you start titrating. ठीक है? So volume of B, ठीक है ना? Volume of B, say there will be some volume of B consumed in this process, है ना? Consumed until the titration is done. Let's that be V1. ठीक है? Let's that be V1.
and suppose definitely in case of C I don't know anything, but in case of B I know the normality. So I know the normality of B, ठीक है ना, remember I know the normality of B, so B normality is N1. So what is the milli equivalent of B used here? N1 V1, ठीक है ना कि नहीं, ठीक है ना, B used up N1 V1. So if B, this much B is used to neutralize this much A, so milli equivalent of A in flask, how much? Same, N1 V1. So originally if you see the original A that I have taken, I have found out their concentration and the total milli equivalent that is there, ठीक है. Now what I'll do, I'll take the same amount of A in another flask, ठीक है, same amount of A in another flask, and I'll now titrate it with, sorry, I'll now titrate it with C, ठीक है, I'll now titrate it with C until the titration is complete, ठीक है, हो गया. Now as soon as titration is complete, after that remember the volume will be volume same as flask 1. So this is flask 2, this is flask 1, ठीक है. Now titration is complete. Now this reaction mixture is again titrated. This reaction mixture, please write, this reaction mixture is again titrated with B, ठीक है. अगेन B, क्योंकि B का हमको सब मालूम है तो B यूज करेंगे इसको, ठीक है. अगेन टाइट्रेटेड विथ B एंड विल चेक द टाइट्रेशन पॉइंट अगेन, ठीक है. सो सपोज इन हियर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ B यूज्ड इज, because I can find out what is the volume of B by seeing the Burette reading when I titrate it again. Volume of B used is V2, ठीक है. So what is the milli equivalent of B used here? N1 is the normality of B, I already know, so N1 into V2. So if N1 into V2 is the milli equivalent of B used over here, then definitely I have taken excess A. I have already said that A has been taken in excess with respect to C. That excess amount of A is now getting neutralized by whom? B over here. So original milli equivalent of A was this much, ठीक है. Now original यहाँ पे कितना था फिर? N1 V1. So इसका तो original solution ले लिया था हमने. So this was N1 V1 original, ठीक है. Original amount, original in this, in flask number 2, number 2 flask, original MEQ of A, how much? N1 V1. Next is some amount of A is unreacted, I titrated with B, किया titration. MEQ of B used is इतना, तो उसमें एक्सेस, फिर वो एक्सेस जो A था वो कितना था? एक्सेस A, एक्सेस A ही तो इसके साथ रिएक्ट किया है ना. सो एक्सेस A reacted with B over here in this flask, ठीक है ना. So when excess A reacts with B, then definitely MEQ of excess A is equal to MEQ of B over here. So MEQ of excess A फिर कितना होगा? सेम होगा, N1 V2, ठीक है ना. So ओरिजिनल इतना था, excess A कितना था? N1 V2, ठीक है. तो अगर excess A इस ये टाइट्रेशन के बाद, if excess A was N1 V2 and originally was N1 V1, then how much A has reacted? How much A has reacted? In flux 2, reacted A with C. C के साथ कितना रिएक्ट किया? जितना पहले था N1 V1 ओरिजिनली माइनस लास्ट में जितना बचा रहा. सो N1 V2, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है. सो दिस इज द मिली इक्विवेलेंट, वी कैन से दिस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट. सो ये क्या है?
जो ए रिएक्ट किया सी के साथ, है ना। तो इसमें पहला रिएक्शन क्या हुआ, ए प्लस सी, है ना। तो कुछ रिएक्ट किया है इसके साथ, जो एक्सेस था तो एक्सेस था, उसको मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास इतना आया। तो कितना रिएक्ट किया, इतना रिएक्ट किया, किसके साथ, सी के साथ। तो सी का मिली इक्विवेलेंट कितना होगा, जितना इसका रिएक्ट किया उतना ही होगा। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी इज N1V1 माइनस N1V2, ठीक है। दिस इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट मिलीमोल्स ऑफ सी। कितना मिलीमोल ऑफ सी था, देखो दिस इज मिली इक्विवेलेंट N1V1 माइनस N1V2, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट से जब मोल में लेके जाते हो तब एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अभी कैसे करना पड़ता है या मालूम है ना, डिवाइड करना पड़ता है मिली इक्विवेलेंट से जब मोल में लेके जाते हो। अभी मोलर नॉर्मलिटी से जब मोलरिटी लेके जाते हो तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। सो जब मिली इक्विवेलेंट से मिली मोल्स में लेके जाते हो, ठीक है, नॉर्मलिटी से जब मोलरिटी से जब नॉर्मलिटी में लेके जाते हो, देखो यार ये याद है ना, n इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, ठीक है ना। सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिली इक्विवेलेंट, ठीक है ना। सो विल बी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मिलीमोल्स। सो मिलीमोल्स लेंगे तो क्या होगा, MEQ बाई एन फैक्टर, ठीक है, MEQ बाई एन फैक्टर। सो यह आ जाएगा आपका एन फैक्टर। अभी C के लिए एन फैक्टर हम पकड़ लिया NF ही ले लिया, चलो ठीक है। अगर NF मालूम होगा तो डाल लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज इफ यू नाउ वांट टू फाइंड आउट द मास, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C, बिकॉज C का तो आपको फॉर्मूला तो मालूम होगा कौन सा चीज़ है, तो मास निकल के आ जाएगा। अभी जो इम्प्योर सैंपल है, जो मास यहाँ पे निकल के आया, ये तो प्योर है क्योंकि ये कैलकुलेशन करके आया, एक्सपेरिमेंट करके आया। तो ये डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल था वो करोगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये है आपका डबल टाइट्रेशन, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम प्रॉब्लम करेंगे। ओके गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम प्रॉब्लम्स करना है किसके ऊपर, बैक टाइट्रेशन के ऊपर, ठीक है। सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम्स वी हैव सॉर्टेड इट आउट फॉर यू गाइस ऑन बैक टाइट्रेशन, ठीक है। In back titration, the main problem is we are dealing with 2 titrations, ठीक है। So when we deal with 2 titrations, the problem becomes complicated, that I agree. But if you have a perfect strategy of solving this kind of problems, I don't think that is a problem. So the problem becomes a no problem if you have a strategy for it. So let us first take up the first problem, problem 1, ठीक है। 3.2 gram of pyrolusite, पाइरोलुसाइड इज MnO2 ओर, ठीक है ना, MnO2 is treated with 0.5 molar 50 ml ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इज COOH, ठीक है, and some H2SO4 and some H2SO4, ठीक है। Now in this case they have said some of the oxalic acid is undecomposed, ठीक है ना, some of the oxalic acid is not reacted with the above pyrolusite ore, ठीक है ना। So that amount is raised to 250 milliliter, ठीक है ना। So that much, that whatever undecomposed is there, I put it in a solution of 250 milliliter. I make a solution of 250 milliliter by this one, ठीक है। Now next they have asked is, okay, 25 milliliter. So I have taken 25 milliliter of this new solution that I have prepared, ठीक है, 25 milliliter of the solution, okay, required
32 milliliter of 0.02 molar KMnO4, ठीक है, for complete neutralization. Here you have to find out percentage of MnO2 and percentage of free O2, not free O2, I will say percentage of available O2 rather, O2 available, ठीक है, in pyrolusite. So first of all we have to make a good strategy on this, ठीक है ना. डिटेक्टिव जब निकालता है कैसे खूनी को पकड़ना है, उसके पहले वो सब चार्ट फाट बनाता है, तो हमको भी वो बनाना है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव 3.2 ग्राम पायरोलूसाइट, ठीक है, थोड़ा शार्लॉक होम्स बनते हैं. 3.2 ग्राम पायरोलूसाइट, ठीक है. आई रिएक्ट इट विथ COOH होल ट्वाइस, ठीक है, 0.5 मोलर 50 ml, ठीक है भाई, ठीक है. 0.5 मोलर 50 ml. एज इट इज़ 0.5 मोलर, आई नो व्हाट इज़ द एन फैक्टर ऑफ COOH. देखो एक ही साथ में जब डिटेक्टिव जब काम करता है, जो जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेता है, सो दैट ही कैन गेट द ओवरव्यू. सो क्या होता है, एन फैक्टर कितना है इसका 2. सो इसका नॉर्मलिटी कितना होगा 1 नॉर्मल, राइट. सो 1 नॉर्मल 50 ml. देखो ये तुमको रिक्वायरमेंट है ना नॉर्मलिटी मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए. सो यू जस्ट डू एज पर इट इज़. ये हुआ है, ये हमने निकाल लिया. इसके होने के बाद रिएक्शन हुआ है, तो इसमें कुछ अनडिकम्पोज्ड क्या बचा रहा, COOH होल ट्वाइस. सो दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम. दिस अनडिकम्पोज COOH होल ट्वाइस एक फ्लास्क में डाल दिया, एंड आई मेड द वॉल्यूम एज 250 मिलीलीटर, ठीक है. आई मेड द वॉल्यूम एज 250 मिलीलीटर, ठीक है. जो भी अनडिकम्पोज्ड है उसका वॉल्यूम है 250 मिलीलीटर. हमने वॉल्यूम बनाया पानी डाल के. इसके बाद यहाँ से मैंने 10 मिलीलीटर लिया. क्या लिया, ये ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है ना. 10 मिलीलीटर ले लिया. 10 मिलीलीटर लेने के बाद बोलता क्या है, ओके 10 मिलीलीटर लेने के बाद आई रिएक्ट इट विथ 32 मिलीलीटर 0.2 मोलर KMnO4 and this 10 milliliter got neutralized. ठीक है. सो चीज का नाम ही बैक टाइट्रेशन है, मतलब ऐसे जाएंगे, ठीक है. सो लेट अस डू वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 10 मिलीलीटर ऑफ व्हाट, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है. सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द एन फैक्टर हियर. तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में था, तो एन फैक्टर होगा 5. So normality will be 1 normal, 0.2 into 5, 1 normal. Volume is known to you, volume is 32 milliliter, ठीक है ना. So here I can find out the MEQ of KMnO4 is how much, 1 into 32, so 32 MEQ, ठीक है. 32 MEQ, ठीक किया क्या, 0.2 मोलर ही था ना. ओके, दिस वॉज 0.02 मोलर, 02 ही लिखा है. सो दिस इज 0.02, सो ठीक है यार, 0.1 होगा. सो ये ठीक है. 3.2 MEQ, ठीक है ना. 3.2 MEQ इज देयर. सो 3.2 MEQ ऑफ KMnO4 वाज रिक्वायर्ड, ठीक है. सो 3.2 MEQ KMnO4 was required for 10 milliliter of undecomposed ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना. सो डेफिनेटली देन दिस 10 milliliter of undecomposed oxalic acid will be having 3.2 MEQ, ठीक है ना. व्हाट, ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट कभी अलग नहीं होता. अगर रिएक्शन किया है इस दोनों ने, तो इसमें जो मिली इक्विवेलेंट है इसमें भी सेम मिली इक्विवेलेंट होना पड़ेगा. सो इसमें भी कितना मिली इक्विवेलेंट है, 3.2 मिली इक्विवेलेंट है,
ठीक है। लेकिन ये कौन सा सॉल्यूशन से लिया गया था? ये लिया गया था एक 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन से, जिसमें मैंने सिर्फ कितना मिलीलीटर लिया? 25 मिलीलीटर, सॉरी 25 मिलीलीटर लिया, 25 मिलीलीटर लिया। सो 25 मिलीलीटर में आपको 3.2 मिली इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड है। सो अगर 25 मिली इक्विवेलेंट में, सो इसमें निकल गया, इसमें मिली इक्विवेलेंट निकल गया, है ना। इसमें कितना है मिली इक्विवेलेंट? 3.2। अभी ये वाला सॉल्यूशन किससे आया? 250 से। सो अगर 25 मिलीलीटर में 3.2 मिली इक्विवेलेंट है, सो 250 में कितना होगा? निकालो यूनिटरी मेथड, 10 टाइम्स 32 मिली इक्विवेलेंट होगा, है ना। 250 में 32 मिली इक्विवेलेंट होगा। सो दिस अनडिकम्पोज COOH होल ट्वाइस इज जस्ट 32 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसमें ओरिजिनली कितना मिली इक्विवेलेंट दिया था, है ना। तो ओरिजिनली हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ओरिजिनली मिली 50 × 1, सो 50 मिली इक्विवेलेंट दिया था। उसमें 32 तो रिएक्ट किया ही नहीं, तो कितना रिएक्ट किया है? सो COOH होल ट्वाइस रिएक्टेड कितना होगा? जितना दिया था माइनस जितना बचा है, सो 50 माइनस 32, दैट इज ओनली 18 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। सो अभी देखो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड reacted will always have to be equal to milli equivalent of MnO2, है ना। यहाँ पे जो MnO2 है उसके साथ इक्वल होना पड़ेगा। अगर इक्वल है तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 कितना है? 18 होगा। सो 18 मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 इज देयर। सो इफ मिली इक्विवेलेंट इज 18, सो आई एम कमिंग ऑन दिस साइड, so it is 18 by 1000 equivalent. Now how do you calculate equivalent? Weight by equivalent weight, है ना, weight by equivalent weight. Now at this moment you have to know what is the equivalent weight. Well, you can do a simple thing also. You can just change it to millimoles because you have already learned. मिली इक्विवेलेंट से मिलीमोल जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है ना। सो देखो, बाई व्हाट? n फैक्टर। सो MnO2 जब रिएक्शन करता है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द चार्ट, यू कैन रेफर, इट गो अप टू Mn2 प्लस n फैक्टर क्या है? इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ Mn4, 4 से 2 तो 2 होगा। सो यहाँ पे 2, सो ये हो जाएगा आपका 9 मिलीमोल्स, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा, मैं मॉलिक्यूलर वेट से कर दूंगा, ठीक है। सो 9 मिलीमोल्स मतलब 9 by 1000 मोल्स, एंड वेट यू नीड टू कैलकुलेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2 is I guess 87, yeah 87, you can check. So you will get weight as 0.7821 gram. Percentage, now you can calculate 0.7821 divided by 3.2 into 100, whatever the answer will be your answer, ठीक है ना। हो गया। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ O2. सो हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ O2 अवेलेबल? देखो यार, व्हाट इज द मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2? whatever be the milli equivalent of MnO2, that will have the milli equivalent of O2. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ O2 है आपका 18, दैट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ O2, दैट इज 18 by 1000 will be equal to weight by equivalent weight of O2. Now what is weight? Weight I don't know, I have to calculate. Equivalent weight of oxygen is always 8, you know that. So accordingly you can find out, answer will be 0.144 is equal to W. Again you can just divide by 3.2 and find out the percentage. ठीक है? So only one thing I want to reiterate, this is back titration, you have to go from backwards. It will be difficult, it will not be easy, it looks cumbersome, but अपना मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ना, उससे ये प्रॉब्लम्स बहुत ईजी है, वो मेरे को मालूम है, क्योंकि इसमें आपको यू जस्ट हैव टू डू
कैलकुलेशंस विच आर वेरी सिंपल, ठीक है। यूनिटरी मेथड ये वो करके सब आ जाता है, सिर्फ आपको अप्लाई ठीक से करना है, अंडरस्टैंड करना है कैसे किसके साथ रिएक्शन किया, फ्लो चार्ट बनाना है, आफ्टर दैट हो जाएगा, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन फ्लो चार्ट एंड नथिंग एल्स। विल डू अनदर प्रॉब्लम ऑन दिस बैक टाइट्रेशन that came in I think IIT JEE 1988. We are going to do a problem, ठीक है। Now as you have already done a problem over here, and definitely this is JEE class, so we are not going to apply very big methods like this. This is the first problem. I have explained a lot of things to you, but not in this problem. I will be solving it in very less amount of time, ठीक है। So here it is 0.56 gram of limestone means calcium carbonate, ठीक है। ओके, ये दिस इज ट्रीटेड विथ COOH whole twice to get calcium oxalate, ठीक है। एंड दिस इज अगेन ट्रीटेड विथ KMnO4 and this decolorizes. KMnO4 decolorizes means it is neutralized. ये जो KMnO4 यूज हुआ है that is 45 मिलीलीटर and 0.2 नॉर्मल, सब कुछ दिया हुआ है, अच्छा है। You have to find out percentage of CaO in limestone. Okay, so one by one we'll just go. See, first of all, CaCO3 MEq will be equal to MEq of COOH whole twice, because these two reacts will be equal to MEq of calcium oxalate, because this is the product, it doesn't change, and this will be equal to MEq of KMnO4. नो एक्सेस वेक्सेस का कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। सिर्फ दो टाइट्रेशन है और कुछ नहीं। सो देखो, एट द एंड ऑफ द डे कैल्शियम कार्बोनेट का जो MEq है दैट विल बी इक्वल टू MEq ऑफ KMnO4. सो 45 इंटू 0.2 डायरेक्ट, सो दिस विल बी 9, ठीक है ना, 9 मिली इक्विवेलेंट, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट इज MEq CaO, because CaO is present in, if you want to do it like this you can, CaO is basically like this, right? So CaO is present in CaCO3, जितना MEq CaCO3 है उतना ही MEq CaO होगा, ठीक है, CaCO3 जितना है। So this is 9, we know that, ठीक है ना, 9. So now next is calculation, nothing else, that is 9 is MEq, so you have to calculate equivalent 1000 equivalent of CaO. So number of equivalents कैसे निकालते हैं, weight by equivalent weight, ठीक है। So 9 by 1000, so weight I don't know, I have to calculate equivalent weight of CaO. CaO means calcium का 40, इसका 16 मतलब 56, but valency of calcium is 2, so equivalent weight will be 28. So 28 is equal to 9 by 1000, ठीक है। उसमें आपका जितना आंसर आएगा उतना आंसर है 0.252, यू कैन चेक, एंड परसेंटेज विल कम 45%, ठीक है। सो दिस इज केम इन 1988 IIT. इट्स अ नाइस प्रॉब्लम. just test the concept that you understand that all MEqs are equal and nothing else. So that is the end of back titration, ठीक है। After this, the next video we will be coming up with the double titration, ठीक है guys. Okay, thank you.